और डिस्कस करते हैं कि ये जो तेज़ी पूरे ग्लोबल इक्विटी में नज़र आ रही है, हरा स्क्रीन हो गया है, वो उसके पीछे के कारण क्या क्या हैं। संतोष, गुड मॉर्निंग। इससे पहले कि मैं आपसे सीरियस बातें करूं, आपसे आपके होली के प्लान्स क्या हैं? वहाँ यूएस में आप लोग होली कैसे मनाते हैं? इंडियन कम्युनिटी तो बहुत लार्ज है वहाँ। हाँ, वीकेंड पे होता है, कभी कभी इधर उधर फंक्शंस चलते हैं, बट इट्स नॉट वेरी ओवरऑल, नहीं कम ही है यहाँ पे। तो बट इंडियन एसोसिएशंस है काफी, तो होली सेलिब्रेशन चलते हैं। राइट, बट मेनली ऑन ये जो वीकेंड्स। होली का माहौल होली के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ग्लोबल माहौल इंप्रूव होता हुआ, हैप्पी होली स्क्रीन बोल रहा है, ग्रीन हरा गुलाल, इसके पीछे कारण आपको क्या नजर आ रहे हैं संतोष? या आई थिंक मैं जरा इंथुजियाज्म थोड़ा कर्ब करना चाहता हूँ, ओके। क्योंकि ये इन अ वे दिस इज अ रिलीफ रैली। इन अ बेयर मार्केट यू हैव दिस वेरी वायलेंट रैलीज, तो समझिए वही वही हो रहा है। अभी इट्स टू अर्ली टू से कि वी आर ऑल क्लियर नाउ टू गो अप, क्योंकि अभी काफी रिस्क हैं। अभी ये वॉर भी चल रहा है, अभी इन्फ्लेशन रिस्क बहुत है, और ये रेट्स, तो ये जो चेयरमैन पावेल ने बताया कि ही इज गोइंग टू बी वेरी एग्रेसिव। आई मीन 25 बेसिस पॉइंट्स वाज एक्सपेक्टेड, बट थोड़ा कंसेंसस जा रहा था कि शायद 4 ही 5 होंगे रेजेस, बट ही इज गोइंग ऑल इन 7 raises overall this year, 3 next year, and then he's going to reduce his balance sheet. So I mean, there's going to be tremendous near-term shock to the economy, but we can withstand it, and that is why the market it dropped initially, and then फिर ऊपर गया जब पावल ने बताया कि अपनी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, there is tremendous demand, and we can withstand this, so there is no risk of recession, and that was the big fear कि रेट्स इतने बढ़ाएंगे, शायद बहुत जल्दी बढ़ाएंगे, and put us into recession and maybe even stagflation. तो वो रिस्क निकल गया, एंड उसलिए द मार्केट रैली। बट कल देखना पड़ेगा, कल एंड परसों देखेंगे कैसा होता है। द यील्ड्स वर फ्लैटनिंग, देखेंगे वहां पे क्या असर हो रहा है, तो कल परसों देखना पड़ेगा। दिस वाज इन अ वे अ रिलीफ रैली। All right, morning संतोष, प्लेजर टू हैव यू। ये रिलीफ रैली है बिल्कुल, और बहुत ही अच्छे से फेस्टिव मूड में हम इसे देखेंगे। लेकिन एक और बड़ी बात जो फेड ने इसमें क्लियरली कही, उन्होंने ये कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसेशन isn't particularly alleviated। इसका आप इसे कैसे रीड करेंगे? क्या बाजार ये तो फैक्टर इन कर रहा है कि इन्फ्लेशन है, फेड ब्याज दरें भी बढ़ाएगा, 6 बार बढ़ाएगा, और अगली 2 मीटिंग्स में कुल मिलाकर 75 बीपीएस भी एंटिसिपेट यहाँ करना चाहिए, लेकिन रिसेशन का कोई खतरा नहीं है। क्या ये बड़ी स्टेटमेंट है? बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, एंड इट वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड, क्योंकि कंज्यूमर एंड कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स आर वेरी स्ट्रांग, द अंडरलाइंग पेंट अप डिमांड इज स्ट्रांग, द इन्वेंटोरीज आर लो, सो द ओवरऑल even before the war, ये जो coming out of Omicron, the market was just going to snap back up because there was tremendous demand for that, and so we were expecting this. This war came in and added a layer of concern. But inflation, he said, there is no fear of that. Labor demand is strong. There's still so many openings. Wages are going up. So in that sense, the demand side of the equation is solid. Supply side will get better, hopefully, with all this war resolution and all the supply bottlenecks. So I think the supply demand imbalance should come into focus, but the rates are going up because he's just normalizing the rates. He wants inflation at the 2% level down the road. So I think he's just normalizing interest rates, and that's the right thing to do in this atmosphere, especially when he thinks that recession is not a risk. So I think that was a good move, expected move, but in the near term, and like the earlier speaker was saying, 3-4 जब rates बढ़ाते हैं at least 2 or 3 times, the banks, the rate sensitive companies, especially the banks, do very well, and then down after 3 or 4 rate hikes, that's when the impact shows, and the economy starts slowing down slightly, inflation peaks up, so that's when the bank financial slow down. But in the immediate, I think financial will do well, and high quality techs, defensive techs, and the consumer discretionary companies will do well. Clearly, financials, high quality tech, discretionary tech और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर खास तौर से फोकस रखना चाहिए। और यूएस फेड ने ब्याज दरों में जो 0.25% की बढ़ोतरी की है, उसके चलते हम देख रहे हैं एक्शन पैक यहाँ पर दिन की शुरुआत नजर आती हुई। इस बीच चलिए हमारी टेक्निकल्स की तरफ वापस चलते हैं और उनसे बात करते हैं, उनकी कॉल्स जो बची